Hello guys, welcome to the channel where you get obvious knowledge regarding your studies. So today's video is adjustments of the final account. Now, what are the adjustments of final account? Let us consider in this video. So the very first adjustment is closing stock. Now what do you mean by closing stock? Closing stock क्या होता है? So closing stock means any goods which is left over at the end of the year. ऐसे गुड्स जो साल के एंड में बच गए हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे. करेक्ट. सो क्लोजिंग स्टॉक हैज टू इफेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट? क्योंकि जब भी बिजनेस से गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा. एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. व्हाई बैलेंस शीट एसेट साइड? बिकॉज गुड्स आर दी एसेट्स फॉर बिजनेस. सो द टू इफेक्ट्स आर ट्रेडिंग अकाउnt credit and balance sheet assets. Continue to the two outstanding expenses. Now what are the outstanding expenses? ऐसे expenses जो पे करने बाकी है, those expenses which are yet to be paid. तो ऐसे expenses या तो वो trading के elements भी हो सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. करेक्ट. So the first effect is trading or profit and loss account debit side. What you have to do in the debit side? You have to add those expenses to the respective expense. Say for example, salary is outstanding of rupees 1000. So what you have to do? You have to add that 1000 rupees to the salary part. Correct. In profit and loss account debit side. So the two effects are, first is trading and profit and loss account debit side, and in debit side you have to add those expenses. And the second adjustment is liability side. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. वाई बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड? क्योंकि एक्सपेंसेस जो पे करने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो पे करने बाकी हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज अवर ऑब्लिगेशन टू पे, इट इज अवर ड्यूटी टू पे, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. करेक्ट. सो लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. So the second effect will be balance sheet liability side. Okay. So going to third adjustment. Third adjustment is prepaid expenses. Prepaid expenses. Whenever I say prepaid, the name itself suggests prepaid मतलब पहले से ही पे करे हुए expenses. आने वाले साल के expenses हमने इसी साल पे कर दिए. That is prepaid expenses. So the two effects will be trading or profit and loss account debit side. What you have to do in debit side? You have to less from the respective expenses. You have to less from the respective expenses. And the second effect will be balance sheet asset side. Sir, adjustment ऐसा क्यों? Why we have to add in outstanding and we have to less in prepaid? Because outstanding are yet to be paid. जो पे करने बाकी है तो वो तो ऐड करने पड़ेंगे. बट जो एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हम जो ऑलरेडी पे कर दिया एक्सपेंसेस है, उनको क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे. करेक्ट. सो वी हैव टू लेस those expenses which are prepaid and we have to add those expenses which are outstanding. Sir, trading or profit and loss account debit side, less from respective expenses, and second effect balance sheet asset side. Coming to the fourth adjustment, this is outstanding incomes. Outstanding income. Those incomes which are yet to be received. ऐसे incomes जो अभी तक receive होने बाकी है. Correct. So two effects are profit and loss account credit side, add in respective income. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे रिस्पेक्टिव इनकम में क्रेडिट साइड पे. When I talk about income, we have to go to credit side. When we talk about expenses, we have to go to the debit side. Correct. So outstanding income के दो इफेक्ट क्या होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम. एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड. इनकम्स रिसीव्ड करनी बाकी है. इनकम रिसीव करनी बाकी है. सो अगर इनकम रिसीव करनी बाकी है तो दिस इज राइट ऑफ द बिजनेस. दिस इज राइट्स ऑफ द बिजनेस. प्री रिसीव्ड इनकम. नाउ व्हाट इज प्री रिसीव्ड? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्री मींस पहले से ही रिसीव कर ली हुई जो इनकम है वो हमारी प्री रिसीव्ड इनकम होगी. सो द टू इफेक्ट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड
less from respective income. And the second effect will be balance sheet liability side. Income हमने अगर पहले से ही receive कर ली है तो we have to less from respective income. So two effects will be profit and loss account credit side less from respective income and balance sheet liability side. Coming to sixth adjustment, depreciation. Now what do you mean by depreciation? Reduction in the value of fixed assets. Whenever I say reduction means हमें add करना है कि less करना है? Sir, हमें less करना है. So the first effect will be balance sheet asset side less from fixed assets. What we have to do? We have to go to balance sheet, we have to go to asset side, and we have to less from fixed assets. We have to less from fixed assets. Correct? And the second effect will be profit and loss account debit side. What we have to do? We have to debit the profit and loss account. Sir, why we have to debit the profit and loss account? Because depreciation is reduction in the value of fixed assets, and whenever I say there is a reduction in the value of fixed assets, that means there is a loss for a business. Considering this seventh adjustment, this is unrecorded purchase. Now what do you mean by unrecorded purchase? Those purchases which are not recorded in the books of accounts. Sir, purchase has been posted to trading account debit side. So the first effect will be trading account debit side. Add in purchases. Purchase को record नहीं किया तो record कर लो trading account के debit side पे. And the second effect will be balance sheet liability side. Add in creditors. Why we have to add in creditors? Because there is a direct relationship between purchase and creditors. Correct? So the second effect will be balance sheet liability side. Add in creditors. Correct? Now considering the eighth adjustment, unrecorded sales. Now what do you mean by unrecorded sales? Those sales which are not recorded in books of accounts. So the first effect will be trading account credit side, add in sales. We have to add in sales. And the second effect will be balance sheet asset side, add in debtors. Now there is a direct relationship between sales and debtors. So balance sheet asset side, add in debtors. Correct? Ninth is goods distributed as free sample. Whenever goods are distributed as a free sample, there will be two effects. That is, first is trading account credit. याद करो मैंने बताया था कि जब भी गुड्स बिजनेस से जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी. करेक्ट? So trading account credit side first effect, and the second effect will be in profit and loss account debit side. Why profit and loss debit? Because advertisement is expense for business. Correct? So goods distributed as free sample के दो adjustment क्या हो जाएंगे? Trading account credit side and profit and loss account debit side. Very good. चलो continue to 10th. Goods taken by partner for personal use. Whenever I say personal use तो आपके दिमाग में क्या आता है? Drawings. ये सब आपको चीज पता है कि जब personal use आएगा तो it will be considered as drawings. Correct? So the first effect will be trading account credit side. Now why trading account credit side? Because goods are being taken over by the partners, or you can say taken over by the proprietors. Correct? So whenever goods are taken by partners or taken by proprietor for personal use, तो गुड्स आए के गए, तो goods are been going out of the business. So trading account credit side, the first effect will be trading account credit side, and second effect will be पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. अगर आपने पार्टनर्स करंट और कैपिटल नहीं बनाया है, अगर आपने सारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कर रहे हो, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू लेस फ्रॉम द कैपिटल. करेक्ट? ओके. सो कंसिडरिंग द नेक्स्ट इज 11th, uninsured goods destroyed by fire. Now what do you mean by uninsured? Uninsured का मतलब होता है ऐसे goods जिनका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है. ऐसे goods जिनका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है वो क्या हो गए? destroyed by fire, मतलब जल गए. तो goods आए के गए, goods गए तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. Simple. And the second effect will be, now if goods are been destroyed by fire, तो obviously there will be a loss for business. Correct? तो profit and loss account debit side. Correct? Now considering the 12th, which is most important, insured goods destroyed by fire. Now
यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड ₹10,000 एंड क्लेम एडमिटेड ₹8,000। इसका मतलब होता है अवर गुड्स आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट ₹10,000, हमारे 10,000 के गुड्स क्या हो गए, destroyed by fire, and insurance company claim is admitted of ₹8,000 only. Correct? Now there will be 3 adjustments for this. First, trading account credit side. Now how much amount of goods have been destroyed by fire of ₹10,000? तो 10,000 का ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेगा. Correct? Now the second adjustment will be balance sheet asset side. Now why balance sheet asset side? क्योंकि 8,000 are been admitted as a claim, तो वो उतने मिलने चाहिए हमें. So this is the rights of the business. So asset side 8,000. And the third adjustment will be profit and loss account debit side. So अगर 10,000 में से 8,000 के गुड्स का ही पैसा मिला तो कितने गुड्स का पैसा नहीं मिला, that is 2,000, that will be loss for business. So the third adjustment will be profit and loss account debit side ₹2,000. Correct? Chalo. So this was the very important adjustment for final account. Now what 13 adjustment says, interest on capital, salary to partner, commission to partner. Correct? So even this has 2 effects. Profit and loss account debit. Why? Because these all are expenses for business. So profit and loss account debit. And the second effect will be capital or current account credit side. Why capital or current account credit side? Because these are incomes for partners. So partners current और capital में क्या कर देंगे हम लोग, credit कर देंगे. Correct? So the 2 effects will be profit and loss account debit and capital or current account credit side. Okay. Now considering the 14th adjustment, interest on drawings. Now what do you mean by interest on drawings? Drawings means, ये तो सब आपको पता ही है, drawings का मतलब क्या होता है, any amount which is withdrawn by proprietor or partners for their personal use. Correct? So there will be 2 adjustment, that is profit and loss account credit side, because interest on drawings will be income for business, and the second effect will be capital or current account debit side. Correct? Now here I have written a note for that. Whenever you calculate the interest on drawing, it is always calculated for a period of 6 months only. ये हमेशा याद रखना, 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया जाता है. करेक्ट? देयर इज अ रूल इन दिस. Okay, now considering the 15th adjustment, that is bills receivable dishonored. Now what do you mean by dishonored? Dishonored का मतलब होता है पैसे नहीं मिले, मतलब bills receivable के जो पैसे थे वो हमें नहीं मिले हैं. करेक्ट? तो जिन जिन लोगों का नाम हमने बिल्स रिसीवेबल में लिखा था उन लोगों का नाम अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट इफेक्ट विल बी asset side, that is balance sheet asset side less from bills receivable, and the second effect will be in the balance sheet itself, asset side itself, add to the debtors. We have to add back to the debtors. Now considering the 16th adjustment, that is bills payable dishonored. जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड था वैसे ही बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड है. करेक्ट? तो जिन जिन लोगों को पैसे पे करने थे उनको हमने पैसे पे नहीं करे हैं. करेक्ट? सो द एडजस्टमेंट्स विल बी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, एंड द सेकेंड इफेक्ट इटसेल्फ विल बी इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड दैट वी हैव टू ऐड टू द क्रेडिटर्स. सो बिल्स पेएबल के 2 एडजस्टमेंट क्या हो गए, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ऐड टू द क्रेडिटर्स. 17th, that is bad debts. Now bad debt means those amount which are irrecoverable from the debtors. वो अमाउंट जो डेटर्स हमें पैसे नहीं देने वाले. करेक्ट? सो अगर डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे तो हमें डेटर से क्या करना पड़ेगा, उतना अमाउंट लेस कर देना पड़ेगा. सो द फर्स्ट इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट असेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड सेकेंड इफेक्ट अब अगर हमने डेटर से पैसे रिसीव नहीं करे तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो गया. Correct? So profit and loss account debit side, add in old bad debts. The second effect will be profit and loss debit side, add to the old bad debts. Okay. Now 18th adjustment is reserve for doubtful debts. This means RDD.
जिन डेटर्स पे डाउट होगा उसके लिए हम रिजर्व मेंटेन करेंगे, एंड दिस इज आरडीडी, एंड दिस इज विच आरडीडी, दिस इज न्यू आरडीडी, करेक्ट। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट आरडीडी का होगा तो वो हमेशा न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट होगा। सो द टू इफेक्ट्स विल बी बैलेंस शीट asset side less from debtors, and second effect profit and loss account debit side add in old bad debts, correct। Now considering the next, that is discount on debtors। discount on debtors, debtors को हमने डिस्काउंट दिया। debtors means जिनसे पैसा लेना है, जिनसे पैसा रिसीव करना है, दोज आर द डेटर्स। तो डेटर्स को अगर हम डिस्काउंट देंगे तो दो इफेक्ट क्या होंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड profit and loss account debit side, because discount has been allowed to the debtors, that is expenses for the business, correct। Now next, this is discount on creditors। discount on creditors, discount on creditors, creditors means जिनको पैसा पे करना है, correct। creditors are the liabilities, so the balance sheet liability first effect will be balance sheet liability side less from creditors, and second effect will be profit and loss account credit side, because whenever creditors are being paid lesser amount we will gain something। अगर हमने क्रेडिटर्स को कम पैसे दिए हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, गेन होगा, इनकम होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप एवरीवन has understood this adjustment. Thank you everyone.